astronosphere, and that is known as what I said, that H mental. तो हमें आइसोपिस्टिक लेवल किधर मिलेगा? यस टेल मी. आई हैव सेड दैट आइसोपिस्टिक लेवल आई विल गेट द लोवेस्ट वन. इट मींस द प्रेशर हियर एंड देन प्रेशर हियर बोथ हैव द सेम. यही इन द लास्ट क्वेश्चन आई हैव डन. एंड देन दिस इज ऑल्सो, लेकिन ये क्या है आपका H एस्ट्रोनोस्फीयर. इसमें यहां तक मेंटल चला गया. सो व्हाट द इक्वेशन विल बी एबल टू गेट? इसका इक्वेशन, यस टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन? H height of the water into density of water plus height of the old sediment into density of old sediment plus height of crust into density of crust. उसके बाद height of mantle into, yes tell me, yes, into density of mantle plus, yes, height of astronosphere plus density of astronosphere. Height of astronosphere into density of astronosphere is equal to height of, which one I said that? New sediment into density of new sediment plus height of old sediment into density of old sediment plus height of crust into density of crust, height of plus height of mantle, जो यहां तक है, height of mantle into density of mantle. So height of mantle, height of दोनों साइड का क्या है? सेम, कैंसिल. height of crust and density of crust same. height of what I said that, ये old sediment कहाँ गया? old sediment and density of old sediment get cancelled. Yes, and then we have to see, like I said that हमें क्या बचा? HW rho W plus H astronosphere rho astronosphere equals to H new sediment into rho new sediment. It is okay. और हमें क्या मिल रहा है? What is the height of water? 2. What is the height density of water? 1. height of astronosphere तो नहीं पता मुझे. density of astronosphere we know that 3.2. and here height of new sediment, I said that new sediment कहाँ है? That is we have to know height of new sediment and density of new sediment, it is what? 1.8. तो हमें इक्वेशन क्या मिला? Yes, H astronosphere into 3.2 plus 2 equals to H new sediment into 1.8. यही है क्या? यहाँ पर गलती क्या हो रहा है? height of new sediment. नहीं, that is correct जो भी है. This is okay. This is the equation that we have got. यहाँ पे भी height of the new sediment आप देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ तक जा रहा है. The height of new sediment we are not knowing. We are not knowing. Understood it? Huh? This is clear. This is the one equation we have got. Second equation if you see, आप देखोगे कि यदि यहां से यहां तक everything is equal height. Yes or no? Another equation we have to see that height, I said that this, इसकी वजह से
इसकी वजह से, तो ये 3 दिस, यदि हम टोटल हाइट का इक्वेशन देखें, नाउ इक्वेशन ऑफ हाइट ओनली, यहां पे सेम हाइट दिख रहा है, यस. सो व्हाट आई एम फाइंडिंग, 2, 3, 30, 70 and h astrosphere. This is the total height we are finding. And यहां पर हम लोग क्या हाइट देख रहे हैं, यस, h new sediment height depth. This is I said 3, this is I said 30, this is I said that 70. तो 3, 30, 70 it has been cancelled. तो हमें क्या मिला, h ns equals to h as plus 2. So what is the height of new sediment? तो जितना एस्ट्रोनोस्फीयर में गया है ये 2 किलोमीटर and as much it has gone into the what is the depth of the lake? Yes, लेकिन आप जैसे ही लेक में you started putting sediment, तो this is the lake, 2 किलोमीटर thick lake. लेकिन जैसे ही आप सेडिमेंट डालने लगे, इसकी हैवी है, जैसे आप व्हेन यू स्टार्टेड पुटिंग हैवी थिंग्स इन द शीप, तो शीप में डालोगे तो वो नीचे जाएगा, लेकिन हमें लेक को भरा हुआ कब देखेंगे, व्हेन द लेक जाएगा, इट विल कम डाउन टिल यहां तक आएगा दबने से, और यहां तक टोटल हम तभी बोलेंगे लेक हैज बीन फिल्ड अप विद सेडिमेंट. तो ये जो 2 किलोमीटर है, इसके अलावा ये पोर्शन कहां गया, ये इतना पोर्शन डेप्थ हुआ, तो दैट पोर्शन हैज गॉन इनटू एस्ट्रोनोस्फीयर में. सो वन वी हैव गॉट एच एन एस न्यू सेडिमेंट इक्वल्स टू एच एस्ट्रोनोस्फीयर प्लस 2. तो ये इक्वेशन एच एन एस की वैल्यू हम किसमें डाल देंगे, किसमें डाल देंगे हम, विल पुट इनटू दिस. सो एच, I said that HAS into 3.2 plus 2, HNS की जगह लिखेंगे HAS plus 2 into 1.8, और HAS 3.2 plus 2 and HAS into 1.8 and that is 3.6, and then ये इधर ले आया मैंने, तो HAS 3.2 minus 1.8, how much it will be, 1.4, and then 3.6 और 2 उधर जाएगा तो 1.6. So HAS equals to 1.6 upon 1.4, so it will be around 1.1. So the ये एस्ट्रोनोस्फीयर में जो गया, how much, 1.1. इसका मतलब कि for filling 2 kg lake, isostatic equilibrium can be achieved by filling 3.1 kilometers sediment. Understood? So हमारा HS 1 point, तो इसका मतलब H, ये इक्वेशन देखेंगे, height of new sediment will be what, HAS plus 2. HAS is what, 1.1 we got, and 2, 3.1 kilometer. So when we'll be able to get the isostatic equilibrium? By filling how much? For filling 2 kilometer lake, we need 3.1 kilometer sediment to achieve isostatic equilibrium. समझ में आ गया how to do? इसमें ये वाले हमेशा फिक्स रहेंगे. Understood it? Ready? Can you do the next question? Can you do the next question? Simple है, that it is, I said that if we'll do this kind of example, you know that an examiner will understand. I said that it is in a combination of Airy and it is in a combination of Pratt, and it has been said like I said that, और साथ में एक फ्लैक्सर मॉडल भी कहा जाता है. समझ में आ रहा है फ्लैक्सर मॉडल किसको कहते हैं? फ्लैक्सिटी समझते हैं, इलास्टिसिटी. कभी आपने देखा होगा द पर्सन हु इज जंपिंग इन द ओलंपिक, ये दबाव देता है, देन इट स्टार्टेड, तो जितना दबाव दोगे और जितनी इलास्टिसिटी होगी उतनी, और जैसे ही हटोगे तो ये ऊपर आ जाएगा. इस पे से जैसे ही ये वेट हटाओगे तो वो ऊपर जाएगा. यस और नॉट? इट इज इन अ वैनिंग.
This is the concept given by Wanning. Wanning has said that this is in a flexure. The upper crust is in a kind of plate is in a lithosphere, is in a what, elastic, and then our what is asthenosphere is in a plastic. If you are putting the weight, then it is going down, and if you are removing the weight, it is getting up. Simple it is. I said that. किसने कहा? Who has said that? The somewhere Wanning, Airy, Pratt, looking in the best isostatic model in the present time. Understood it? So हमने पिछला क्वेश्चन कौन सा किया? पिछला क्वेश्चन. So ये समझ में आ चुका है आपको? And finally what we got? Around 1.1, and it means the sediment, new sediment which has been deposited, how much? 3.1 kilometer to get the balance. Any question? Understood it? This is the new way to what is in a gate. If you want to, आपको कुछ नहीं करना है. It will be, आपको केवल few, थोड़ा सा side box बना के इसको side में दिखाना है आपको. Side box बना के, if you will present it, examiner will be extremely happy. And if it is in a 20 mark question or 15 mark question, and if you have written about it, then 100%, 2-3 marks he will give you. This is the way in isostacy you can be able to get the extra marks. और ये 3 marks आपके life का बहुत valuable marks होगा. So how to get extra? Because आज तक isostacy में nobody is giving an example. Nobody is giving example. Nobody is making it relevant. When you will make it relevant, then you can be. Understood? So write down one question. And you have to tell me, मैं same question दूंगा, answer should be fast. Same question होगा. Over 4 kilometer thick, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो thick old sediment है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो cancel होते हैं सारे. Over 4 kilometer thick old sediment, over 4 kilometer thick old sediment, 3 kilometer deep lake exists. Over 4 kilometer thick old sediment, 3 kilometer deep lake exists. And this lake has been completely filled up. This lake has been completely filled up with new sediment. Then find out isostatic equilibrium achieved by new sediment deposited depth or thickness. New sediment deposited thickness. कोई दिक्कत? New sediment density is 1.8, old sediment
2 and water density is 1.